Welcome to Khijadiya Bird Sanctuary. And a very good morning guys. कैसा लगा आप लोगों को लास्ट व्लॉग? एक्चुअली हम लोग रात को इधर we reached around 11:30. Google Map was showing around 12:15 and all. बस हमने एक टर्न लिया था. That's from the राजकोट जयपुर हाईवे. जयपुर हाईवे तो पूरा खाली रहता है. And right now it's 9:30 in the morning. So बस अभी एडिटिंग ही चालू है. Right now it's 11:40. Actually I'm staying at the home because editing खत्म करनी है. इस लास्ट वीडियो की बाकी अभी. So I'm मासा एक्चुअली वो लोग बाहर गए and I'm staying at home. और दोपहर का प्लान तो एक्चुअली आज कुछ खास है नहीं. We'll just probably go into the city, roam around. हेलो. वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा. शाम हो जाएगी. क्यों, क्या हुआ? अरे लेकिन कुछ से वो तो कल के व्लॉग में देख लियो. चल चल कल के व्लॉग में देख लियो. ठीक है. अभी फाइनल रेंडरिंग इज हो रहा है इधर. हाँ चल. एंड करंटली इट्स 6 in the evening. सो मेरा पिछला व्लॉग शायद आप लोग अब तक देख ही लिया होगा. इफ नहीं देन इधर आई बटन में आ जाएगा. गो वॉच दैट. इट वाज ऑन द वे काइंड ऑफ रोड ट्रिप वीडियो. सो बी श्योर टू चेक दैट आउट. सो टेक्निकली इट्स द नेक्स्ट डे क्योंकि कल हम लोग शाम को एक्चुअली कार में प्रॉब्लम होता. सो आई वाज जस्ट आउट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एज टुडे वी आर लिविंग फॉर मैं आपको रास्ते में बताऊंगा. एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ बीच और बर्ड सेंचुरी टाइप ऑफ प्लेस है. सो आई विल टेल यू द नेम ऑन द वे. एंड राइट नाउ इट्स 4:43 इन द मॉर्निंग. और मैं वैसे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सुबह के 4:45 बजे आई कैन नॉट लाइक जस्ट शाउट लाइक दिस अदरवाइज सब उड़ जाएंगे. So yeah, let's go. And so final we are leaving. And we have reached गुलाबनगर. एक्चुअली वहाँ पे चांदोड़े तक कुछ भी खाने पीने का था नहीं. तो मुझसे आगे आ गया इन गुलाबनगर और द जामनगर हाईवे. यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके एंड देन वी विल कंटिन्यू. देखते देखते हम लोग पहुंच गए खिजड़िया. एक्चुअली हम लोग जामनगर गए थे नाश्ता करने के लिए बिकॉज यहाँ आजू बाजू कहीं कुछ था नहीं. एंड हियर वी रीच्ड एट खिजड़िया बर्ड सेंचुरी. एंड वहाँ से चल के यहाँ तक आए. Actually, DSLR cameras are not allowed until and unless you give 200 rupees to them as a ticket for shooting the videos. हम जुगाड़ करके अंदर ले आए वैसे तो. And we have to walk around 1.5 kilometer to reach the exact spot. और यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे birds flamingos उड़ रहे as you guys can see there. And there are number of lakes तो नहीं कह सकते but there are number of तड़ाव like this over this area. And actually there are 2 Khijadiya bird sanctuary. We are in the second number right now. First number is बाहर निकलो then take a left and you will reach at your first. अब चलते हैं यहाँ पे. कैसा लगा टाइम लैप्स? यहाँ पे बहुत ही मस्त वाले फोटो स्लो मोशन. कैमरा एंगल क्यों बदल गया भाई? या एंड देन
बस इधर से तो बाहर आ गए. Now we will go to the first bird sanctuary, which is over there. बस अभी हम फर्स्ट वाले में आ गए. वहाँ से नाश्ता पानी कुछ भी अलाउड नहीं है, सो अदरवाइज छुपा देने को हम भी लेके आए हैं. अब चलेंगे और आगे. और यहाँ पे कार से अलाउड, सो यू हैव टू गो लाइक ड्राइव एंड ड्राइव. सो लेट्स गो. And we have arrived at the final place. इस साइड कोई रास्ता ही नहीं है. और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द बर्ड्स and all about that. चलते ऊपर. Wow. Just look at the view there. कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट इट्स सीरियसली लुकिंग ऑसम. So yeah, I was telling this guy, I forgot to tell you one thing, that yeah, entry fee is I think 100 per person, and if you wanna use the camera then 200 for video shooting and all. But हम जुगाड़ करके ले आए अंदर, just hide the camera and it will be fine until unless आपको वहाँ by the security guard. अब चलते हैं नीचे. And now we are going to a beach. और अभी वहाँ से बाहर आके we came here in the interpretation center. और अंदर आते ही वेलकम टू खजाड़िया बर्ड सेंचुरी. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ म्यूजियम. और इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ से मैं पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस. आई थिंक इट्स साउंड आता होगा. और ये पूरा खजाड़िया बर्ड सेंचुरी का पूरा मैप दिया गया है यहाँ पे. How dinosaurs transform into birds with this. Poppet. और आई थिंक यहाँ पे ये लोग कोई काइंड ऑफ मूवी या समथिंग लाइक डॉक्यूमेंट्री दिखाते होंगे. आई थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे स्टूल्स सब अवेलेबल है और एक टीवी स्क्रीन भी है, दैट्स वाई. और वो रूम से निकलने के बाद we came to the exit point. If you guys are coming to this sanctuary, then make sure आप ये इंटरप्रिटेशन सेंटर और म्यूजियम में श्योर जाना, बहुत ही मज़ा आएगा. So right now we are at the बालाचड़ी बीच. एक्चुअली एक बालाचड़ी बीच का सैनिक स्कूल का गेट आएगा, वहाँ से राइट लेना है. भले ही बालाचड़ी बीच स्ट्रेट लिखा हो, बट टेक राइट, then you will arrive at this kind of beach, which is probably not a beach because सारा पानी सूख चुका है. In fact, all the people are shocked that पानी कहाँ गया.
कि मैंने पहले कहा बहुत ही मस्त वाला फोटो हो गया। हमारे साथ 2-3 और भी गाड़ियाँ आई थी बट वो लोग भी निकल गए बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल बीच। और अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे थोड़े तक आगे, नियर टू दैट। ऐसे अब आए थे, सोचा कुछ जाकर ही आए। If anyone of you are coming to Balachadi beach, then be sure to come after 4 PM, otherwise कुछ ऐसी हालत होगी। कुछ अरे वरना हमारे ऐसी हालत होगी, कुछ पानी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा और पूरा ऐसी हालत होगा। So we have reached राजकोट। सुबह सभी राजभोग में खाना खाया। If you guys are from Rajkot, then check out the Rajkot restaurant. टेस्ट बहुत ही अच्छा है। It's in front of the Synergy Hospital. So right now it's 8:10 in the night now, and now we are going out for the dinner. प्लान तो था एक्चुअली अर्बन डेक जाने का, बट देन आई थॉट कि अर्बन डेक नेक्स्ट टाइम रखता है, पिज़्ज़ा खाने की इच्छा है। सो या वी आर जस्ट गोइंग आउट। मज़ा आ गया बॉस, दबा के खाया आज तो। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है एंड राइट नाउ इट्स 11:36। So guys, that's it for this video. If you guys enjoyed this short and simple vlog, then don't forget to hit the like button. If you guys are new watching my channel, then नीचे एक मस्त लाल कलर का चमचमाता सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें and also press the bell button. And I'll hope to see you in the next video. Till then, bye bye. And tomorrow we're coming back to the Himatnagar. So yeah, bye bye.